When I talk to many of you aspirants giving a prelims और mentors से बात करते हैं, कुछ पुराने aspirants से बात करते हैं, एक common theme strategy में निकल के आता है that all of you are recommended from अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप मेंस पे फोकस करें, मेंस आंसर राइटिंग करें एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर जनवरी के बाद में यू गेट इनटू अ प्रीलिम्स मोड. सो यू आर डिवाइडिंग अ प्रिपरेशन टिपिकली इनटू one mains preparation answer writing, and the second is prelims preparation through prelims test. It's a very right strategy, and I believe in this. I also recommend this. But what is missing as a part of appreciation preparation is कि आप आंसर राइटिंग जाने से पहले या प्रीलिम्स टेस्ट में घुसने के पहले आप अपना कंटेंट कार्य कंसेप्ट टॉपिक्स पे कंट्रोल तो पहले करिए. What is done is most of us who want to join answer writing, we jump into answer writing sessions or we get into mains test series, but we do not do a very important part, which is by hearting and memorizing the entire notes and content and concepts that we have. Answer writing is the last stage in controlling your content. जहां पर कि अब बहुत कुछ आपको पता है. Now you can pull out content, you can relate content, start writing. So if I look at a process of preparation अगर linear scale में मैं map करूं, your process starts with number one, have class notes, have notes taken as a part of the course completion in foundation. उसके बाद में you must enrich your content, add more content, because कोई भी इंस्टीट्यूट जाएंगे उस इंस्टीट्यूट का पूरा कंप्लीशन होता नहीं है. You must additionally add content. Then you must make sure that you have read certain reference books. लक्ष्मीकांत एक रेफरेंस बुक है, या फिर स्पेक्ट्रम सीरीज के रेफरेंस बुक्स हैं, एनसीईआरटी रेफरेंस बुक्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे सो दैट योर कोर कंसेप्ट्स नाउ गेट अ सॉलिड फाउंडेशनल बेस. उसके बाद में यू मस्ट मूव इन द फोर्थ ब्लॉक वेयर यू आर एबल टू डू करंट अफेयर्स लिंक टू दो सब्जेक्ट्स and then move on towards mapping all the content to the PYQs. Till you do all of this and memorize it, you cannot get into answer writing, you can't get into prelims preparation either. It's like a common block, okay, from your left towards right. Have notes, then you have to enrich your notes, read reference books, map with current affairs, and PYQ basis analysis of what's important, what's not. ये करने के बाद में your preparation branches out into mains answer writing and prelims test series based prelims preparation. Before you jump into answer writing, आपको control करना पड़ेगा by actual conscious memorization of all these concepts and content and topics, without which you can't recall the content at the appropriate time. On my Telegram channel, Shabbir Educami for IAS में I am focusing on completing this kind of content mastery by December, January तक, जहाँ कि आपने कोर 5-6 सब्जेक्ट को ढंग से कर लिया. So core subjects like polity, modern India, history, geography, environment and also economy. ये आपके core subjects हैं. अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं, then you can get comfortable whatever you want. And by the way, when I say controlling this, I don't mean don't write answers, but don't jump into writing answers without memorizing this content. तो टेलीग्राम चैनल शब्बीर एडुकेमी फॉर आईएएस में मैं अभी पॉलिटी का स्प्रिंट चला रहा हूं. Every day I give you one topic. Every subject I've divided into about 20 odd topics, and we cover one topic every day. I tell you what current affairs, I give you the mains mapped questions, I suggest what type of reading resources from books and NCRTs, ताकि आप पूरा दिन 5-6 घंटे एक टॉपिक को मास्टर करें. And then you have a sense of completion of that particular subject. Without doing this type of study, अगर आप कूद जाते हो आंसर राइटिंग में या फिर prelims test में, year after year you'll keep on tripping because you have not mastered the content, you have not been able to internalize the content. So be with me on Shabbir Educami for IAS. It is for all students who are planning to give your prelims. खासकर the older students जिनका कोर्स खत्म हो चुका है, those who have already given maybe one attempt of prelims. This is the time, these 4-5 months में आप एक एक सब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. Month of September I have kept for polity. I've even given you very nice gaps ताकि आप अपने backlogs भी कर पाएं. After September we'll get into modern India. Then we'll get into topics of economy, then geography.
तो ऐसे हमें 4-5 महीने में टिल अबाउट दिसंबर जनवरी तक आपके 4-5 कोर सब्जेक्ट्स है जिसमें कि 80-85% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आप मेरे साथ खत्म कर सकते हैं। एंड प्लीज स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्टीट्यूट्स एंड कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ दिस। आपको खुद पढ़ना होगा। इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ लर्न एंड गेट यूज्ड टू रिसर्चिंग, डेवलपिंग कंटेंट, यूजिंग AI, यूजिंग Yuki, हमारा AI tool, so that you can master the subject and then move into the prelims mode. Welcome to Study With Me, Shabbir at Edukemi. Study with me on my Telegram channel, Shabbir Edukemi for IAS. Geography Optional Foundation course by Shabir sir, where you will get live interactive classes and course completion in a module-based approach. Scan the QR code and join now.